चलो स्टार्ट मैम कर। थोड़ा हाइड। हम्म स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज रिडॉक्स कपल नॉट इन आवर सिलेबस? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है, नेक्स्ट ईयर करेंगे। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम एलिमेंट, लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, कॉपर प्लस वन, when it is dissolved in water, what will happen? It is converted to Cu2 plus and copper. See carefully, the same species is showing its oxidation and the same species it's showing its reduction. What is disproportion reaction? Whenever the same species shows oxidation as well as reduction simultaneously in the same reaction, we call it disproportion reaction. This example I have given. Third question is, which of the following will show disproportion reaction? It is very simple to find out how. Chlorine is given. You know, the minimum oxidation state of chlorine is -1 and maximum is +7. Now, out of these four species, the species in which oxidation state is intermediate. What do you mean by intermediate? Intermediate, the meaning of intermediate is if the oxidation state of chlorine is from -1 to +7, in between these two, less than +7 and more than -1 should be there. Suppose in this example, the oxidation state of X -2 equal to -1, it is +1. So next is ClO2, X -4 equal to -1. Here it is +3, and this X -6 equal to -1, it is +5. In this, it is showing +7. So it will not show disproportion reaction, because to show the disproportion reaction, oxidation state should be more than -1 and less than +7. So all of these will show disproportion reaction, because in these species, the oxidation state of chlorine is intermediate between -7 to -1 to +7. Okay. Next, fourth question. Write the oxidation state of underlying species, CrO5. Now, this is explained on the basis of structure, not on the basis of formula. Whenever this question is there, you have to draw the structure. It has butterfly-like structure. This oxygen shows -2 oxidation state. These two are the peroxo linkages. So -1, -1, -1, -1. This chromium is surrounded by -6. So chromium should possess +6 oxidation state. This is its answer. Now, CaO2. What is the oxidation of calcium in CaO2? Not calcium of O2, right? Calcium has fixed oxidation state of +2. We have to find out of oxygen. Two oxygens are there, so +2x equal to 0. Why it is equal to 0? Because the species is neutral. So it will be 2x equal to -2. X equal to -2 upon 2. Answer आ गया -1. So this shows -1. Now what about KIE3? I haven't put underline below I. So we have to find out the oxidation state of Ki. This is also explained on the basis of structure only, not on the basis of formula. Its structure is like this, right? These two iodine are connected to iodine, then their oxidation state will be 0. And this iodine is attached to potassium, which is showing +1 oxidation state. So it must be -1. Okay. So answer is -1 and 0, if this is the question of MCQ style. Next is H2S4O6. Let me clear all the drawings. The next is H2S4O6. For this, once again, we have to draw the structure. 4 sulfur in one line. 4 sulfur in one line. And middle two are not connected to anything. Now, this is the structure of H2S4O6. These two sulfur are not connected to anything. That's why their oxidation state will be 0.
And this sulfur is connected to -2. Oxygen has -2, hydrogen has +1. Overall, OH has -1. So this sulfur is surrounded by -5, and this sulfur will possess +5. Similarly, this sulfur is showing 0, and this is showing +5. So what is the correct answer is, what happened? Mute कर लो अपने आप को. 0 and 5 is the correct answer. Now next is Br3O8. This is once again the exceptional case, and the oxidation state is decided on the basis of structure. Its structure is like this. Now we have to find out, this bromine is surrounded by -2, -2, -4. So this bromine will show +4 oxidation state. And this bromine is surrounded or attached with -2, -2, -2, -6 it is attached with. So it will show +6. This will also show +6. So answer is +4 and +6. Next, why SO2 and H2O2 act as oxidizing agent as well as reducing agent, but O3 and HNO3 act as only oxidizing agent? Why? Now see, in SO2, sulfur possesses +4 oxidation state. Sulfur possesses +4 oxidation state. Its minimum oxidation state is -2 and maximum oxidation state is +6. And this oxidation state is intermediate. What does it mean? Sulfur can increase its oxidation state as well as can decrease its oxidation state. So will act as oxidizing agent as well as reducing agent. Similarly, in H2O2, O2 is present in -1 oxidation state. And this is also intermediate because the minimum is -2 and maximum is +2. If we connect it with fluorine also, so it is intermediate, will show act as reducing agent as well as oxidizing agent, and will show reduction as well as oxidation. But O3, in O3, oxygen has 0 oxidation state, and this can be decreased only. If we consider O3, we are not supposed to combine it with fluorine. So minimum oxidation state is -2 and maximum is 0. It is already present in maximum oxidation state. So it is present in, 1 second. 2 more students are entering the class actually. Okay. This is present in the maximum oxidation state. It can only decrease its oxidation state or can show reduction only. So that's why will act as only oxidizing agent. In HNO3, nitrogen is present in maximum oxidation state. It cannot further be increased, but can. Yes. देखा मैम पढ़ा भी रही हैं अभी कल पेपर है ना. So it act as only oxidizing agent. Write formula for the compounds tin 4 oxide. What does it mean? Tin. The formula for tin is Sn. I mean the symbol. And tin 4 means +4 oxidation state. Oxide means 2 negative oxidation state. Cross. So it will become SN2O4. To simplify it, the answer is SnO2. Now, chromium 3 oxide. What does it mean? Chromium is present in +3 oxidation state. Oxygen is present in -2. Cross. The formula will become Cr2O3. Next is thallium. The symbol for thallium is Tl. It has +1 oxidation state. It's given. SO4 has 2 negative charge. Cross. The formula will become Tl2SO4. Right? Next is iron 3 sulfate. How to find out the formula? 1 second. Iron 3, Fe 3 plus, SO4 2 negative. Cross. The formula will become Fe2 SO4 whole thrice. Okay, it is ferric sulfate. Give list of the compound showing oxidation number of carbon from -4 to +4 and nitrogen from -3 to +5. So I think you must know
the names of the compounds. 1 second. Anybody knows? Should I tell or not? This is given in the notes. Okay. You keep on combining carbon with O, CO, CO2, CH4, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, CH2Cl, CH2Cl. Write down these compounds and try to find out the oxidation number of carbon in all these compounds. And nitrogen, similarly, you can write down NO, N2O, NO2, N2O3, as such N2, N2O5, NH3, NH2, NH2. Now you try to find out the oxidation number of nitrogen in all these compounds. You can write down these compounds. Okay. Next is justify. The question number 8 is justify that 2Cu2O, Cu2S, and this reaction is a redox reaction. Let me tell you or give you one hint. Whenever in any reaction, simple metal is there, like zero oxidation state is there. Whenever in any reaction, one species is present in the zero oxidation state, it is 100% redox reaction. Right? And how to justify? In this, copper is present in +1 oxidation state. Here also present in +1. Sulfur is present in -2. And here it is present in the form of +4. So oxidation is also happening, reduction is also happening. So this is a redox reaction. And what is oxidant and reductant? Copper going from +1 to 0 means it is getting reduced. It will act as oxidizing agent or oxidant. The copper is oxidant and sulfur is reductant. Select 3 metals that show disproportion reaction. एक तो मैंने आपको बता दी थी अभी अभी, ये वाली कॉपर वाली, Cu2 प्लस कॉपर. नेक्स्ट है थेलियम वाली, और अगर आप इसको करोगे +3 में तो ये चला जाएगा थेलियम +1 एंड थेलियम 0 में. राइट. ऐसे ही एक और है हमारा गैलियम. इट इज ऑल्सो शोइंग disproportion. Next is how many redox reactions are possible? Types, given example each. Redox reactions are of 4 types: combination reaction, dissociation reaction या decomposition, disproportion reaction, and displacement reaction. Right? When this plus HCl is produced, but H2SO4 KBr bromine is obtained by. The question is, chlorine and bromine both belong to the same family, but the product is different. In this case, Cl is being converted to HCl, or we can say here chlorine is present in -1 oxidation state, and here also in -1 oxidation state. Here bromine is present in -1 oxidation state, and here 0. Means bromine is showing oxidation here. But chlorine is not showing oxidation here. Rather, it is working as spectator ion. Spectator ion is that whose oxidation state does not change. Right? So, इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि जो bromine है, it is converting from -1 to, this is -1 and this is 0. It is getting oxidized or is acting as reducing agent. तो हम कह सकते हैं Br negative is a strong reducing agent, but chlorine is not. Why F2 is the strongest oxidant and Hi or I negative is best reductant? Very simple. Strongest oxidant वो होता है जिसका reduction potential बहुत high होता है, because its reduction potential is very high. Why I negative is best reductant? उल्टा कर दो, इसका reduction potential low होता है. और हम ये भी कह सकते हैं because of the longer bond length, easily it is broken, and जो हमारा I है वो उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा वो कर रहे हैं
मैडम इधर ही रिकॉर्डिंग 13 question. See the 13 question. Oswald process. Ammonia, this reaction is given. What is the maximum म्यूट weight करते of गए। NO that can be obtained समझ आ रहा है, पता ना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ammonia? लाए। म्यूट कर लो वो फिर अपने आप को स्क्रीनशॉट। बच्चों, म्यूट करो जिसकी भी आवाज आ रही है। एंड 20 ग्राम ऑक्सीजन. This question is basically of taken from first chapter. Ammonia. Nitrogen has atomic mass 14. This has 3, 17. 17 into 4 gram ammonia reacts with 5 into O2 का होता है 32 will react, and 4NO means 4 into nitrogen has oxidation atomic mass 14 and this is having 16. What is 14 and 16? It is 30, right? What is the maximum weight of NO? 4 into 17, 5 into 32, 4 into it was 30. From 10 gram ammonia, the reaction says 4 into 17 gram ammonia produces 4 into 30 gram NO. Then 10 gram से कितना produce होगा? 4 into 30 अपॉन 4 इंटू 17 इंटू 10. ठीक है, यहां से आप अपना आंसर निकालो जो भी आएगा. नाउ टू फाइंड आउट कि 20 ग्राम से कितना मिलेगा. 5 इंटू 32 ग्राम O2. कहां से पता चला? फ्रॉम द रिएक्शन इटसेल्फ. O2 गिव्स NO. 4 इंटू 30 ग्राम NO, तो 20 ग्राम से कितना मिलेगा? ये दो इक्वेशंस आपको लगानी है. यहां से भी आप आंसर पता कर लो कितना आता है. यहाँ से तो 15 आ गए. सिंपल थी कैलकुलेशन, मैं नहीं कर दी यहाँ पे. यहाँ पे 300/17 आ रहा है. दोनों में से जिसका आंसर स्मॉल होगा वही आंसर होगा. इसका तो आ गया 15 ग्राम, उसका भी निकाल लो कितना आएगा. जिसका आंसर स्मॉल होएगा वही आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम एमलगम. मैंने नोइंगली 3 कंपाउंड लिखे हैं. सोडियम एमलगम का मतलब होता है जो सोडियम है ना, वो उसके साथ मरकरी के साथ जस्ट चिपका हुआ है. ठीक है, जस्ट चिपका हुआ है, बॉन्ड नहीं बनाता. दुनिया के सारे मेटल्स जब एमलगम बनाते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है. और Na2O2 में कितना है? Na2O2 में सोडियम का +1, के अंदर भी +1 है. ठीक है. नेक्स्ट है बैलेंस द रिएक्शन. फाइनली बैलेंस आ गया. वो इसमें 10. ध्यान से सुन लो, ये बैलेंसिंग आ गई है बेसिक मीडियम में. हमारा पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का निकालने के लिए +4 इक्वल टू 0 कर लो बच्चों. म्यूट. और ClO3 में इसका +7 है. NO में +2 है, इसका -1 है. लेट अस फाइंड आउट इसका कितना आएगा. ये आएगा x इक्वल टू -4/2, -2 आ जाएगा. 2 से +2 में दिस इज ऑक्सीडेशन हैपनिंग. +7 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन इज हैपनिंग. तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन को स्प्लिट कर लेंगे. यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और नीचे लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन. स्पेस नहीं है ना, इसीलिए. ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी? -2 से +2, ये शो कर रहा था. तो N2H4 gives NO. एंड रिडक्शन किसकी हैपन हो रही है? ClO3 से Cl नेगेटिव. Once again we have to write down their oxidation. ClO3 में +5 है, इट्स नॉट +7. ये +5 है. +5 से -1 में जा रहा है. कैसे? x -6 इक्वल टू -1 +5 आ जाएगा. ठीक है, एक बार इसको दोबारा से लिख देती हूँ. यहां लिखेंगे this is oxidation half reaction.
एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम लिखेंगे +5 टू -1 में जा रहा है। देख लो, मैं 2 क्वेश्चन करा देती हूँ इसके, एक और भी है नीचे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने बोला था ना, आओ काओ, आओ काओ, मतलब पहले एटम्स को बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन है, 2 लगा दो। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, -2 से +2 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, लेकिन नाइट्रोजन कितने हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। हमको 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। कहाँ करने हैं, रिडक्शन में राइट साइड नहीं करते, ऑक्सीडेशन में राइट साइड करते हैं, +8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है चार्ज को बैलेंस करना, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, उस तरफ कितना है, 8 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 8 नेगेटिव, -8। हमें दिया गया है बेसिक मीडियम, मतलब वी आर गिवन OH नेगेटिव आयोन्स। किस साइड लगाएं, ऑफ कोर्स इस साइड लगाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 OH नेगेटिव प्लस N2H4 2NO plus 8 electron. The last step is O. We have to balance oxygen. This side we have 8 oxygen and this side we have 2 oxygens. So how many? This side is short of 6. This side is short of 6 oxygen. So we will put 6 water just to balance the oxygen. डन। आओ काओ से करना है हमें, ये हमारी बैलेंस हो गई। अब आ जाओ इस रिएक्शन पे, इसमें भी सेम लगेगा आओ काओ। आओ काओ का क्या मतलब होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू बैलेंस द एटम्स। बैलेंस्ड है, एक क्लोरीन है, एक है। ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 तक जाने में 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो रिडक्शन में राइट साइड नहीं जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है चार्ज को बैलेंस करना, इस साइड पर -7 चार्ज है और उस साइड पर -1 है, तो हमें 6 OH इस साइड ऐड करने पड़ेंगे टू बैलेंस द चार्ज। सो 6 OH नेगेटिव। लास्ट में ऑक्सीजन पे आ जाओ, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3, इसमें कितने हैं, 6, यहां पर 3 ऑक्सीजन कम है, तो 3 वाटर यहां पे ऐड कर दो, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, दोनों रिएक्शन को पास पास लिखना है, लेकिन लिखने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वेट 1 मिनट। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे इनको, और 8 OH नेगेटिव, रुको, लिखने से पहले मेक श्योर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बाय चांस सेम है। नहीं, सेम कहाँ है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4, 24 हो जाएगा। नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ये 6 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम हो जाए, ओनली देन वी कैन ऐड दीज टू रिएक्शंस। तो इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 को किससे करना था, 3 से। ये हो जाएगा 24 OH प्लस 3N2H4 6NO प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने वाटर थे हमारे यहाँ पे, 6 वाटर थे, है ना। 6 को मल्टीप्लाई करो 18 वाटर हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 12 वाटर 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 ClO3 नेगेटिव, एंड ये हो जाएगा 4 Cl नेगेटिव, प्लस ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 24 OH नेगेटिव हो जाएगा, राइट। वाटर से वाटर कैंसिल, 6 बच जाएंगे, OH से OH कैंसिल, यहां पे कितने थे, 24, ठीक है, वहां थे 24, कैंसिल हो गए, बस इनको यहां पे लिख दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, ये हमारा हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और बैलेंसिंग करा देती हूँ ताकि बैलेंसिंग हो जाए, है ना, बाकी रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज 10 मिनट्स में जो है, 5 मिनट्स में हमारी ये टाइम पूरा हो जाएगा जूम का।
मैं पहले रिएक्शन करा देती हूँ 18 वाला, ध्यान से देखो बेटा। इसमें लिखा हुआ है Mn3 प्लस अनस्टेबल अंडरगोज डिस्प्रपोर्शन। देखो ये भी डिस्प्रपोर्शन है। डिस्प्रपोर्शन का मतलब है जो Mn3 प्लस है इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू Mn2 प्लस एंड MnO2, राइट। तो एक मैंगनीज अपने आप और लिख दो 3 प्लस, इसकी रिडक्शन हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन, बिकॉज हियर मैंगनीज शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन को स्प्लिट कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। H प्लस का मतलब है द रिएक्शन इज टेकन इन द एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Mn3 प्लस गिव्स MnO2, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिखेंगे Mn3 प्लस से Mn2 प्लस। वंस अगेन आओ काओ, आओ काओ। ए एटम्स 1 1, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 में एक का फर्क होता है, तो +1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। ऑक्सीडेशन में राइट साइड डालते हैं। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है तो लेफ्ट हैंड साइड डाल देंगे। चार्ज को बैलेंस करना है, इधर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम डाल देंगे 4H पॉजिटिव। अब दोनों बराबर हो जाएंगे, +3 +3। इसमें कितना है, इस तरफ है +3 और -1, +2 चार्ज है, उधर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, इक्वल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। लास्ट में ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, इधर एक भी नहीं है, 2 वाटर ऐड कर दो। बस अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये लो, ये आपकी रिएक्शन होगी। सबसे आसान रिएक्शन यही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला है 16 वाला, देखो आप। AgF2 अनस्टेबल है, लेकिन जब ये बनता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? बिकॉज AgF2 में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, इट विल गो टू द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, तो यानी कि अपनी रिडक्शन करेगा। दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, मैंने क्या हिंट दिया था, जब भी कोई एक अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वो 100% रिडॉक्स रिएक्शन है। बिना कुछ सोचे समझे लिख डालो। इसमें कहते हैं 4 इंफॉर्मेशन दे दो अबाउट द रिएक्शन। CN2 है, बस इसमें आपको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, बस ये इंफॉर्मेशन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब कोई सवाल पूछना है तो दोबारा जूम क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे लगता है कि 1 मिनट में एक्सपायर हो रही है। किसी को कुछ पूछना है? मैम पूछो। मैम ये बताओ, आप जो ये असाइनमेंट भेज रखे 19 पेज की, ये खर्चा बहुत है? 200% बहुत है, कुछ नहीं करना और। पास हो जाएंगे इससे?